80 नेगेटिव, ठीक है। नाउ amend the cash flow forecast for July, assuming that cash from debtors and materials are going to be 10% higher than the originally forecasted ones. अच्छा, वो ये कह रहा है कि कैश फ्रॉम डेटर्स एंड मटेरियल कॉस्ट दोनों बढ़ रहे हैं फॉर जुलाई। फॉर एग्जाम्पल है, इतना ऊपर चला गया, ये मुझे लग रहा था ऐसा ही कुछ होगा। अगर आप जुलाई को देखें तो जुलाई में कैश फ्रॉम डेटर्स इज 550, ही सेइंग 10% ऑफ दिस हैज इंक्रीज्ड which will then become 55 plus 550। अनाबिया मोबाइल दे दो आज के लिए, और प्लीज तंग नहीं करो, जल्दी दो, बैठ जाओ अभी। 605 होगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, सिक्स और 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा 605। टोटल कैश आउटफ्लोज में वो आपसे क्या कह रहा है? टोटल कैश आउटफ्लोज में वो कह रहा है कि आपकी मटेरियल कॉस्ट 1.5 किलो दूध मंगवा लो, और उससे कह रहा है तुम लोगों को कैंडी खाना है तो मंगवा लेना। 10% हायर देन ओरिजिनली फोरकास्टेड मटेरियल कॉस्ट है, तो दैट मीन्स दैट माई मटेरियल विल राइज फ्रॉम 160, इट विल बिकम व्हाट 160 में 160 में 16 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 176। एम्प्लॉय कॉस्ट विल बी 185, ठीक है। अदर कॉस्ट विल बी दिस। यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी अब आपकी? 176 प्लस 185 प्लस 155, 340, नो 516। हाउ 176? सिर्फ आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है तो एम्प्लॉय कॉस्ट विल रिमेन द सेम, प्लस 185 प्लस 155 विच विल गिव मी 516, ठीक है। नाउ यू विल टेक आउट नेट कैश फ्लोज विच विल बी 605 माइनस 516, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ 89, ठीक है। अभी तक समझ आ रहा है? सॉरी, ये यहाँ नहीं लिखना, एक मिनट। अजान हो रही है, एक सेकंड इसके लिए खामोश।
ये आ गया समझ में? जी yes. Using the cash flow forecast above suggests 2 ways Abyss can reduce its bank overdraft. Recommend best one. Suggest 2 ways in which you can reduce your overdraft. How can you reduce your overdraft? One, I wrote that negotiate better payment terms with the supplier to delay cash outflows. Very good. And And one is that implement efficient inventory management techniques to reduce holding cost and free up cash for other critical expenses. सही है. और आप ये भी कह सकती हैं कि negotiating credit terms with your debtors. ठीक है, अगर यहाँ तो वैसे कह रहे हैं कि कैश पेमेंट आ रही है, लेकिन अगर आप क्रेडिट दे रहे हैं किसी डेटर को तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. ट्राइंग टू नेगोशिएट वेजेस पेमेंट एज वेल टू एम्प्लॉयज, जो कि बहुत ज़्यादा चंक है आपकी कॉस्ट का. ठीक है, तो वर्किंग ऑन दैट एज वेल विल ऑल्सो इम्प्रूव योर रिकमेंडेड कैश आउटफ्लो प्रॉब्लम. ये ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर. अब मुझे जो है ना तुम्हारे को देने हैं क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड. जी सबर करें जरा, मैं आपके लिए क्वेश्चंस निकालती हूँ इसमें से. ये रहा ना. देखो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम टेस्ट करें. ठीक है जी, तो जो मुझे क्वेश्चंस तुम्हें टेस्ट में देने हैं, मैं एक्चुअली तुम्हें अभी दे रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. Okay. मजे बन गया. असल में मैं स्कैन कर रही हूँ ना, तो इमेज ज़रा अच्छा नहीं आया. ये होमवर्क है, कैश फ्लोज का कर लेना. Okay. सेंड कर रही हूँ तुम्हें अभी. Okay, let's start with income statement. Right away, we will not waste any time at all. अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, चाहो तो लिख लो. दे आर रिलेटेड टू कैश फ्लो. ओके, Sure. sort of like a summary, right? Money is like lifeblood of a business. They are like bullet points. First bullet point: money is like lifeblood of a business.
No matter how profitable a business is, if it is facing a cash flow problem, it will not be able to survive. Obviously, जितना profitable business है, unless and until it is not facing any cash flow problem, it will not be able to survive. इसका ये मतलब नहीं है कि business profit नहीं बना रहा. The problem is that the daily expenses that require certain amount of cash that you do not have. So for that reason, you have to arrange that amount of working capital so that your business can run smoothly. Okay, Arham, Okay. working capital is the amount available. This is the third point. Working capital is the amount available for a business to pay for its short term debt and its day to day expenses. It's just a summary of whatever we have done. Okay, it's a synopsis. जी miss. However insufficient the working capital could lead to closure of a business. जी miss. Liquidity is the ability of a business to pay its short term debt. जी miss. If a business starts trading on credit, it might lead to overtrading, and overtrading might lead to bankruptcy. जी. A cash flow forecast can help plan a business's future cash inflows and outflows. जी miss. Banks are also check Banks also check the cash flow forecast before providing a loan. और तब अब इसमें इनकम स्टेटमेंट का चैप्टर इन्होंने कराया होगा उनको नहीं कराया What is really weird. चलिए बात है इनकम स्टेटमेंट पे income statement. What is an income statement? It's a financial document of the business that records all income generated by the business. Okay. It is a Also known financial as document, सही है, which tells us about the financial transactions that have happened about the business in a particular year. जी.
Income statement by definition are accounts of financial records of the firm's transaction that have happened in a particular time period. ठीक है? जी What are final accounts? They are basically prepared at the end of the financial year Hmm, and give details of the profit or loss made by the business. सही है. इसकी एक definition है, चाहो तो लिख लो. Final accounts are produced at the end of the financial year and give details of profits and losses, current value of the business, and other financial results. Why do managers need this financial accounting information? क्या जरूरत है इसकी? Why do they need it? Know about the profit or loss. To understand where the business is standing at the moment. What are the expenses? What are the losses? What is the income that the business has achieved, to compare the performance with your competitors and your previous year. ठीक है? So there are quite a few reasons why you would be needing to build an income statement. Okay? Okay. To help calculate the profit and losses that have occurred in a particular year. First reason. जी अभी मैं कहीं से बोल नहीं रही हूँ, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, तो अगर कहीं फंसो तो पहले बोल देना. ओके. आज खैरियत, तुमने क्लास जल्दी क्यों रखवाई? कहीं जाना है? नहीं, वो मेरी दूसरी क्लास है, उन्होंने कहा कि मैं 7 o'clock लूँगा, तो फिर मुझे अच्छा. एक आधा घंटा पीछे करानी पड़ी. अकाउंट्स की होती होगी वो. जी जी वो तुम्हें ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं? सोल्यूशन दिखाते हैं या तुम्हारे साथ सॉल्व करते हैं या एक्सेल पे सॉल्व किस तरह करते हैं? हाँ, वो टेक्स्ट बुक में वो जो होता है सोल्यूशन, वो पहले थोड़ा सा करवा देते हैं, फिर वो मुझसे कहते हैं कि आप करो, एंड देन वी विल चेक आफ्टर वर्ड्स. आफ्टरवर्ड्स कैसे चेक करते हैं? उसी वक्त तुमसे पिक्चर मंगवाते हैं या तुम शेयर पिक्चर, करती हो जी स्क्रीन? पिक्चर सेंड करती हूँ. पिक्चर सेंड करती हो. जी ओके. अच्छा, टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. जी To evaluate the performance of a business by comparing it with previous year or competitors in the same industry. जी To understand whether the business has achieved its targets for that particular year or not. जी To understand the impact on sales of the marketing efforts done for that particular time period.
to help make decisions such as closing a factory or division of business or expanding of business. जी What is meant by profit? What is meant by profit? sales revenue minus the total cost. Very good. There are three types of profit. Can you name them? Gross profit, Very good. Or net profit and और एक और है, अकाउंट्स की स्टूडेंट को पता होना चाहिए. it's profit after tax. वही है. जी सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है वो प्रॉफिट. और नहीं बताऊंगी. Retained profits. Okay. Retained profit. There are three types of profits: gross profit, net profit, and retained profit. Gross profit is the difference between revenue earned from selling a product and the cost of making that particular product. Okay. What is gross profit? It is the difference between the revenue earned by selling a product and the cost incurred in making that particular product. बस. ठीक है. जी Difference between the revenue earned from selling the product and the cost of making that product. Net profit जी is the difference between the revenue from sales जी and the total cost जी or the difference between GP and expenses जी profit. This profit is usually called net profit, which is calculated after all the expenses have been paid for. yes Retained profit. जी The owner of a profitable business may decide to reinvest some of the profits of the business. Definition नहीं है इसकी सही, दोबारा बताती हूँ. Retained profit is also known as the accumulative profit a business accumulates over a particular time period. It is also used as a source of finance. also known as
also used as a source of finance. जी How does a business makes profit? basically like they cut the costs and increase the sales revenue. What is the formula? The formula for profit is revenue minus total cost. Yes, जी revenue minus total cost. total cost. What is total cost? Total cost is cost of sales, जो कि आपकी जीपी लाता है, और आपके expenses. रेवेन्यू क्या है? अगर नहीं आ पता तो लिख लें. It is the amount earned by business by selling products or finished goods. जी हाय हाय हाय, नींद आ रही है, आज चाय नहीं पी है. मैं चाय बनाने खड़ी हुई तो वहां से कॉल आ रही थी. अबे मैंने कहा आज तो 7 बजे क्लास करी थी. जी सब छोड़ छाड़ के आ गए. मैंने कहा भाई बाद में पिएंगे. Okay, formula for revenue is easy. I've already told you, SP into quantity of goods sold. yes जी Formula for gross profit is sales revenue minus cost of sales. जीत गए हम, जीत गए हम, जीत गए. और प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है नाजरीन, जल्दी से बता दिए. 2 फॉर्मूला होते हैं प्रॉफिट के. अब बच गई, बच गई. एक तो सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है. ये और दूसरा, और चीटिंग नहीं करना, तो कहीं और से नहीं देखना. नहीं दूसरा नहीं पता. पता है? इनकम स्टेटमेंट सोचो. It is gross profit minus expenses. One of the other formulas is gross profit minus expenses. Okay, write it down. जी लिख लो अगर लिखना है तो. मैंने ख्याल से मैंने लिखवाया है ये. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट फॉर अ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करवाया है. नहीं कराया? ओके, राइट इट डाउन. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट फॉर अ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस. जी Profit is a reward to the business owner for the risk they take in investing their capital into the business. जी Profit is also used जी to जी measure success of a business. First point, measure the performance of the managers.
जी decide whether or not to continue making a particular product, जी finance or purchase a non-current asset, जी मिस attract investors who will provide additional funds to finance business expansions. जी मिस Difference between profit and cash. ये वाली बात है, वो तुम्हारी बुक में नहीं था. जी A lot of businesses, अब समझा रही हूँ, a lot of businesses may be making a lot of profit but they may not have enough cash. What does it mean? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि प्रॉफिट तो बहुत अच्छा बना रहे हैं लेकिन डे टू डे एक्सपेंसेस और कैश जो मैनेजमेंट है उन बिजनेसेस की वो वीक है. ठीक है. ओके Businesses often do not survive long if they do not have enough cash balance, जैसे कि हमने अभी कैश फ्लो के चैप्टर में पढ़ा. ठीक है. A lot of business owners fail because they do not understand the difference between cash and profit. अगर एक business profit बना रहा है तो it doesn't mean that that business is actually having a lot of cash. It just means कि मेरे को जो मैंने एक्टिविटी ऑफ बिजनेस करी उससे मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल रहा है. ठीक है. ओके बिजनेस में कैश मेरे को यूज करने के लिए चाहिए. क्या मेरे पास इनफ कैश है अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए या नहीं है? दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ आई एम रनिंग माय बिजनेस. ठीक है. जी सो व्हाट इज द डिफरेंस? मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज माय what will it not increase? My cash or my profit? Money, if I invest in a business, what will it increase and what will it not increase? increase profit in How will it increase profit, बेटा? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो चीज होती है जो हमने अपनी बिजनेस एक्टिविटी से कमाई. क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब कि ये बुक मैंने लिए, कागज लिए, ये कागज मुझे 1000 रुपए के पड़े. अब मैंने इस बुक में प्रिंटिंग करी, इसकी जेल्स करी, इसको अच्छा सा किया. ठीक है. अब ये बुक मैं सेल कर रही हूँ 2000 की. ठीक है. तो मेरा प्रॉफिट क्या है? 1000. ठीक है. प्रॉफिट वो चीज होती है जो आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी से अर्न करते हो. राइट. रिमेंबर, profit is anything that you earn from a business activity. It is not an investment. It is not capital. मैंने अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो ये मेरा प्रॉफिट नहीं इंक्रीज करेगा. ठीक है. इससे मेरा क्या इंक्रीज होगा? अगर तुम्हें ये नहीं आता तो कैश फ्लो का चैप्टर बिल्कुल बेकार है पढ़ाना. अभी मैंने कैश फ्लो में प्रॉफिट और सब कराया था. जी जल्दी बताओ. कैश इंक्रीज होगा. जी
अभी तुम सामने होती ना तो फिर बस हो जाता काम, बच गई तो। Money invested in a business will not increase my profit, but actually it will increase my cash. एक्चुअली आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना बिजनेस में वो बढ़ेगी। आपको ये बोलना चाहिए था, अकाउंट्स की लड़की हैं आप। इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट की टर्म आ जाती है तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल या कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी टर्म आपने पढ़ी है अकाउंट्स में वो इंक्रीज नहीं होगा। फिर उस कैपिटल एम्प्लॉयड से हो सकता है कि आप अपने वर्किंग कैपिटल के कैश में कुछ डालें, ठीक है, बिकॉज यू आर रनिंग अ बिजनेस, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर such as buying machinery or property will dash my cash but does not dash my profit. मैंने कोई चीज़ खरीदी अपने बिजनेस में, मशीनरी खरीदी, डिलीवरी वैन खरीदी, तो उससे मेरे कैश पे क्या इफेक्ट आएगी? कैश लो होगा। वेरी गुड, डिक्रीज हो जाएगा, जाहिर बात है, मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूँ बिजनेस में, वेरी गुड। और प्रॉफिट को क्या होगा? प्रॉफिट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके? इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई प्रॉफिट बिकॉज प्रॉफिट इज एन एक्टिविटी दैट इज a money that is earned after a business activity, ठीक है? आगे बढ़ो। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट are recorded in the income statement as soon as the goods are sold, right? What does it do? It dashes by profit and does not affect the dash. Increases the profit. Yes, very good, शुक्र। Does not affect the cash. कैश को क्यों अफेक्ट नहीं कर रहा वो? क्योंकि अभी तुमने आंसर बताया, सही बताया था, आपकी कैश को क्यों नहीं इम्पैक्ट कर रहा वो? क्योंकि वो क्रेडिट सेल्स है। They will be paid after a month or whatever the credit limit is, okay? I have another class. I know. Please go through the chapter. Income statement I have mailed, मैंने तुम्हें क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दिए हैं, उनको कर लेना। कैश फ्लो को चैप्टर दोबारा पढ़ना, प्रॉफिट और कैश का डिफरेंस अपने सर से दोबारा समझना, और कैश एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस भी समझना। ये सारी टर्म्स तुम्हें भी नहीं समझ आई हैं, ठीक है? तो डू दैट अगेन विथ योर टीचर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।